Hello, my beautiful, strong ladies, strong women. How are you all? Hope you all are doing fine in your lives, and I hope you will keep doing fine and finest in your life. Okay, so let's come to the topic. So our today's topic is how to avoid gossips. Okay, and how to start minding our own business. That is very important in order to grow in life. Okay, and why it is important, we will talk about that. How we can avoid certain talks and how we can grow by minding our own business. I will talk about that today. So the first point is why it is important to avoid certain talks. Why? Because if you are involved in people's gossipings, okay, and you are very interested to know what is going on in a particular person's life, you will not have time to grow. Okay, where is the time? Because most of the time you will occupy your mind in about thinking about those people, okay, which whose lives are their lives. Okay, दैट देर इज़ आपका उसमें क्या मतलब ये है, अगर आपको कुछ पता भी चला किसी के बारे में एंड यू आर जस्ट फीलिंग द वे दैट हाँ उसके साथ ऐसा हो गया है, सो what can you do? If you cannot help anybody in any way, then please leave the situation, leave the conversation, because we are here to grow, to do something, not to gossip about each other. Okay, in our day to day lives we face so many people who are gossiping about us. अब आप सोच रहे होंगे कि उनके बारे में हम क्या करें, अब लोग तो हमारे बारे में गॉसिप करते हैं, उनका हम क्या करें? सो दैट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट इग्नोर दैम ना, जस्ट इग्नोर दैम, बिकॉज इग्नोरिंग दैम इज इक्वली इम्पोर्टेंट. ओके, वी आर इग्नोरिंग द small talks, and we are ignoring such people who are doing bitching or gossips about us. So this is very important for our self growth, and this part is a very important aspect of our self growth, self care, you can say. Okay, so what we have to do? First, we have to avoid such talks. Second, why we have to avoid such talks? It is very important because if you see, there is a proverb that that people who discuss people will get nowhere in life, and people who discuss ideas can achieve anything in life. Okay, so what you have to do, you have to discuss ideas. I am not saying कि you should stop making friends and you should stop socializing yourself, because जहाँ भी जाते हो तो वहाँ तो gossips ही होती हैं, ठीक है ना. तो अब हम टॉपिक पे आते हैं कि हमको उनको अवॉइड कैसे करना है. हाउ टू अवॉइड सच पीपल? वी कैन स्विच द टॉपिक. how can we switch the topic? When suppose one of your known person comes to you and they tell you about someone else, that this and this blah blah is going on in their lives, and this happens, and उसकी नंदन ने वैसा कर दिया, उसके सास उसके साथ से लड़ाई करती है, ये होता है वो होता है, this is her story. So instead of showing the interest in that situation, in that conversation, what do you have to do? You just switch the topic. You just start asking, Livna, please, can you tell me where can I get this book? Can you tell me what can I get in a nearby mall? Have you been there? इस तरह से आप टॉपिक को स्विच कर सकते हो. दिस इज़ वेरी इजी. ओके, आपका फ्रेंडशिप भी नहीं टूटेगा, योर रिलेशनशिप विल बी सेफ, एंड यू विल बी अवॉइडिंग दिस काइंड ऑफ स्मॉल टॉक्स. ओके, आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो रॉन्ग होते हैं. नो, दे आर जस्ट हैबिचुअल ऑफ दैट, एंड यू कैन चेंज दिस हैबिट ऑफ योर्स एनी टाइम. ओके, बिकॉज
इन आर सराउंडिंग्स हम ये इन सब देखते बड़े हुए हैं। हमारी मम्मी के पास कोई और बाहर की लेडी आती थी, वो दूसरों के बारे में बात करती थी, कोई तीसरी आती थी, वो और तीसरे के बारे में बातें करती थी, एंड वो सब लेडीज़ बैठ बैठ के पूरा ग्रुप बनाती थी। तो ये यू कैन सी वेयर आर दे नाउ, आर दे इंडिपेंडेंट वीमेन? नो, दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट वीमेन, बिकॉज उन्होंने क्या किया है अपनी थ्रू आउट देयर लाइफ्स दे डिस्कस्ड पीपल। ओके, आप अपने आसपास के में बहुत सारे लेडीज़ को देखते होंगे जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ्स, दे आर ड्राइविंग व्हीकल्स एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग बाय देमसेल्व्स, एंड यू ऑल्सो फील समटाइम्स कि यार ऐसी लाइफ होनी चाहिए, है ना। बट वो उनको वास्क मिला कैसे? बाय माइंडिंग देयर ओन बिजनेस। सेल्फ ग्रोथ पे कंसंट्रेट करने से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप लाइफ में अचीव ना कर सको। ओके, so my today's topic was how to avoid small talks and how to avoid people who are interested in gossiping always, and if you cannot avoid them, if they are your besties and you feel very good with them, so at least you can try to change them as well. Try yourself also and try to change your friends also. Tell them and that this conversation will not serve you anything, and this will not add any kind of value in your life, so please stop it na. You can tell them at least this. Okay, so that's it for today, my beautiful strong lady. Please take care of yourself, and if you like my videos and if you feel that I should make more videos like that, so you please let me know. Subscribe my channel, like, share, comment. Okay, so okay, love and peace from me to you. Bye.